हरे कृष्णा। अगेन बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। सो वी कंटिन्यू। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धिर्यतमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Okay, so third chapter and text 32. ये त्वेतदभ्यास्यन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमुदां स्तान् विधि नष्टान् अचेतस। नेहा आप पढ़ पाओगे क्या ट्रांसलेशन? नेहा या अनुजा अनुवाद पढ़िए। But those who, out of envy, disregard these teachings and do not follow them regularly are to be considered bereft of all knowledge, befooled, and ruined in their endeavors for perfection. दीक्षा तात्पर्य पढ़िए। But the flaw of not being Krishna conscious is clearly stated herein, as there is punishment for disobedience to the order of the Supreme Executive Head. So there is certainly punishment for disobedience to the order of the Supreme Personality of Godhead. A disobedient person, however great he may be, is ignorant of his own self and of the Supreme Brahman, Paramatma, and the personality of Godhead due to a vacant heart. Therefore, there is no hope for perfection of life for him. ओके दीक्षा आप अनुवाद भी पढ़िए। Translation. But those who, out of envy, disregard these teachings and do not follow them regularly are to be considered bereft of all knowledge, be fooled, and ruined in their endeavors for perfection. So continuing with the theme, third chapter, Karma Yoga, and Arjuna has this dilemma: should I fight or not fight? What do I do? Should I give it up? What do you want me to do? Should I give it up altogether and I better go take shelter in some hermitage, monastery, in some temple, some refuge, or in some caves? And do I practice some form of meditation there? Do some chanting there? Or should I fight? What do I do? And Arjuna is trying to actually look for a exit route as well. But Krishna is encouraging Arjuna to actually fight, but with a selfless spirit. So, like what we studied yesterday, say someone could be a doctor, no problem, which is good being a doctor. But how about being a spiritual doctor? What is more better? Just being a doctor or being a spiritual doctor? Huh? Someone could be prime minister. Great. The nation needs a prime minister because in this age there's democracy required, all these things. But how about the prime minister being a spiritual prime minister? Huh? That would bring so much more value, so much more to the table. And again, as we were just discussing beforehand,
uh, in Western society, in Western world, religion hasn't got a good reputation. Religion hasn't got a good connotation. It brings a bit of a negative connotation. It puts people off. In straight, simple words, it puts people off. And and why? Because earlier perhaps there was a need for religion. Why? Because okay, there was some economic starvation or problem, so use religion as a crux to maybe get some moral support. But now nothing is needed. No, nothing of that sort is needed. And if someone needs any, well, first of all, the society is a very covered up society. Society is honestly is a very covered up society. In the sense, if someone would be struggling as well, one would be feeling very shy to express or say, I'm going through some phase or some problem. Because even though we live in a like British society, very open society, say, but still there are so many taboos or stigmas or this thing within the society that people would feel very uncomfortable in opening up. And even if we open up as well, there isn't really a good solution as well. There isn't, I mean, the way, see, just I'm saying, NHS has got a tremendous facility, very good healthcare system. But the thing is, until and unless you are at your deathbed, uh, until and unless you are really, I mean, see, in order to get a GP appointment or doctor appointment in NHS in UK, one really is in the call. He has to maybe cough and he has to blow his nose or he has to do something, and he really has to express that okay, I'm really having a high fever, I didn't sleep. So some exaggeration is required. Then okay, GP will say okay, fine, come, I will check you, I will give you an earlier slot, an earlier time and all. uh, and I suppose in America, it's kind of a maybe it could be a bit easy to approach a doctor, get an appointment and all. But thing is, any slight thing could get very much exaggerated in America. Oh, do this test, do that test, do this report, that report, and after doing so much of test report and all, we will try to figure out what is your problem. And any small thing, oh no, it could lead to that, it could lead to that, so you need the surgery, you need this, you need that, so much, and the patient gets a bit overwhelmed. The thing I'm trying to express is we are a bit clueless. We honestly are a bit clueless because we don't know what's the real solution. This is why we are so much chopping and changing, chopping and changing. Mm. And also, uh, like covered up society, still, even though we may call very open, liberal, or free, like America had its Independence Day yesterday, it's a big thing in America, 4th of July independence. But still, in America, if you feel like, okay, someone is having some physical health issue or some mental health issue, still it is not so openly discussed and all. And we try to cover up where, through how, through some form of say addiction, cover things up. But and likewise, so Krishna doesn't want Arjuna to be covering things up, and no, no, he wants him to perform his duties selflessly. Uh, This is why it is good to be a teacher, but how about becoming a spiritual teacher? Uh, Teach science, maths, physics, arts, and all, but with an element of spirituality. No harm in having a relationship, but how about being carrying a spiritual relationship? Both partners, if they are spiritually advanced, spiritually disciplined, and spiritually practicing, that will certainly bring way more to the table. That will bring way more to that relationship. No problem in having children, but giving them that spirituality. So, and being a son again, but be a spiritual son. So, likewise, Krishna is encouraging Arjuna to fight, but be a spiritual fighter, be a spiritual warrior. There's many volumes of books written by His Holiness Bhakti Tirtha Swami Maharaj, entitled Spiritual Warrior, Volume 1, 2, 3, 4, 5, 6, I think. Amazing books, Spiritual Warrior. That is what is Krishna emphasizing or encouraging. And see, some more things. We humans now we carry lots of say defects. One of which is
we come to conclusion very quickly, or we form our own understanding and we label that, especially when it comes to spiritual subject matters. Generally to other matters as well, when it comes to sports or when it comes to politics, they should have been done, that should have been done, Brexit should have happened, shouldn't have happened, so many such things and all. But when it comes to spirituality as well, we just very quickly easily pass a more like a judgment. We do not try to understand things, and we do not try to actually go a bit into it and practice ourselves as well. Uh, So we carry this notion to quickly label and quickly say something, and uh, but this spirituality means, say, open-mindedness. Definitely, one should be open-minded, and spirituality means something beyond the body, something beyond matter, something anti-matter. To understand spirituality begins when we understand, at least I'm not this body, I'm a spirit soul. I'm something beyond the body. This, otherwise, what is the difference between a dead body and a living body? Bodies are the same. The dead body also has got two legs, two hands, eyes, nose, ears, everything, and a living body as well. But what is it which is giving the energy, the power to a living body to function? And what is it that a person stops functioning? So it is those subtle subject matters which need understanding. Like desire is such a powerful, subtle subject matters. It's such a powerful, subtle object emotion which needs to be really nicely studied or nicely dealt with. Desire can never be killed, but it can be given a shape. It definitely can be given a shape. So Arjuna, Krishna is wanting Arjuna to fight and be a spiritual warrior, to add more spirituality to one's life. And again, like religion is quite spread out, or say not, a bit misunderstood, perhaps. And also there have been, history says there have been people who practice some form of religion, but they do not represent that religion nicely, or even the religion itself should actually be packed up, because it's not at all applicable, it's not at all suitable. Religion is something which should bind the masses, which should bring the masses together, uh, and bring the masses together for a more unconditional, towards an unconditional service attitude, towards more love and care, more compassion, more brotherhood. But it isn't seen. Generally, religion is, they are seen like as different parties, and all wanting to grow on their head count and show that no, more at the egoistic level, or our religion is better than your religion. Uh, So that sort of religionist we do not want to practice or promote, or that's certainly not the message from Bhagavad Gita as well. So religion is a bit say, distorted. People distort religion. Some religion anyways should be packed up, and the spirit has a bit misunderstood, is a bit misunderstood. Likewise, spirituality as well. Even now, spirituality is a bit misunderstood. Any other thing people can take it to be quite spiritual, any other thing. But no, not everything as such is spiritual. Not every process or act we do is as such spiritual. No, like people may take as well, like, okay, uh, mowing the lawn, it's a spiritual activity for me. This is my spiritual practice. Doing this as my spiritual practice. Lighting the house with candle, this is my way of practicing spirituality. But we do not formulate, we do not manufacture ways by ourselves. Uh, And essentially, spirituality is something which connects us with the higher energy, which connects us with the higher being, which connects us with the universe, which brings us a sense of peace and contentment, irrespective of external situations, which makes us more kind, more compassionate, and even beyond, even beyond.
So Krishna is encouraging Arjuna to fight, but not just fight as a warrior, but be a spiritual warrior. Fight like that. So one can be a son, but much better is if one is a spiritual son. One can be a father, but much better if one is a spiritual father. Then there won't be exploitation. Otherwise, parents themselves they exploit their children. Uh, Children themselves they exploit their parents or like that. So one could be a leader, one could be a doctor, lawyer, engineer, but be a spiritual person, be a spiritual doctor, lawyer, engineer. Then one would really do much good to oneself begin with and to others as well. Any thoughts, any question, comment, or any reflections? And then, okay, let's read a bit more then. सदृशं चेष्टते स्वस्य प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृति यान्ति भूतानि नि- निग्रहे किं करिष्यति. ओके, सो नेहा पढ़ पाओगे क्या? अनुवाद पढ़िए. ओके, दीक्षा आप पढ़िए अनुवाद. And Anuja read तात्पर्य. Translation. Even a man of knowledge acts according to his own nature, for everyone follows the nature he has acquired from the three modes, which what can repression accomplish? Anuja read पर. Unless one is situated on the transcendental platform of Krishna consciousness, he cannot get free from the influence of the modes of material nature. As it is confirmed by the Lord in the 7th chapter, 7.14, therefore, even for the most highly educated person on the mundane plane, it is impossible to get out of the entanglement of Maya simply by theoretical knowledge or by separating the soul from the body. There are many so-called spiritualists who outwardly pose as advanced in the science, but inwardly or privately are completely under particular modes of nature, which they are unable to surpass. Academically, one may be learned, but because of his long association with material nature, he is in bondage. Krishna consciousness helps one to get out of material entanglement, even though one may be engaged in his prescribed duties in terms, in terms of material existence. Therefore, without being fully in Krishna consciousness, one should not give up his occupational duties. No one should suddenly give up his prescribed duties and become a so-called yogi or transcendentalist artificially. It is Read better. these sentences. Okay, continue and then again read No from one, there. no one should suddenly give up his prescribed duties and become a so-called yogi or transcendentalist artificially. It is better to be situated in one's position and to try to attain Krishna consciousness under superior training. Thus, one may be freed from the clutches of Krishna's mind. Therefore, without being fully in Krishna consciousness, one should not give up his occupational duties. Okay. Even a man Yeah, of knowledge acts according to his own nature, for everyone follows the nature he has acquired from the three modes. What can repression accomplish? mm. What does repression mean? Daman. Hmm. So, what does Daman mean?
कुछ दबानो। हाँ भैया, कुछ कुछ दबाव। अ, उजागर नहीं करना ना, फोर्सफुली, है ना, जबरदस्ती से कुछ चीज को दबा देना, ढका देना, छुपा देना, या उसको बस दबाए 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 रखना। जैसे गुस्सा होता है ना, लोग गुस्से को अंदर ही पीते रहो पीते रहो पीते रहो, उस हिसाब से। So very nice actually translation purport. Even a man of knowledge acts according to his own nature, है ना? So person who is knowledgeable as well, doesn't mean if like if someone is wise then he wouldn't act of his own nature. Obviously we all are products of our own nature, and nature is something we have been carrying since previous lives. Through samskars we build our nature through impressions, subconsciously deep rooted in our mind from previous lives, not just this human life, previous human lives, which so many impressions, accumulation of that build up our nature in a way. And then we act. This is a world of action. This is a world of action. Uh, we may think actually this is a world of enjoyment or this is a world of suffering, but actually it is a more of a world of action, more of participation. Uh, So, uh, through so many impressions in our mind from previous lives, they make up our nature, and we act according to our nature. No one is like doesn't act. Everyone acts. Everyone is bound to act in this world and act as per one's nature only. Na? How can one act unlike his nature? If you see, in sports, if you see in field of arts, wherever says in sports, if someone in football, his nature is like a striker, he cannot act like a defender, he will be striking and all. In other sports as well, one will act by one's nature. An important thing to note is nature is one thing, then qualities are another thing, as in one is carrying so much of lust, one is carrying so much of greed, one is carrying so much of envy, or one is carrying so much of kindness, one is carrying so much of compassion, uh, one is carrying so much of honesty. These are the qualities, these are personality traits, and nature is a separate thing, and these are separate thing. Hmm? These qualities, they have their own interplay, uh, and person can work upon his lust, he can work upon his anger, can work upon his being more compassionate, more kind, more truthful and all through good practice. But see, here nature means someone practicing Krishna consciousness. Say this should be a good example. Someone practicing Krishna consciousness say for 40 years, but he struggles with singing. eh? See, materially, his voice, he cannot sing for long, or his voice is a bit rough, or and all. So, cannot expect now, oh, Prabhu, you have been chanting for 40 years. Now you should be able to sing kirtans and all. You should be able to do kirtan. No, that's not his nature. That's not his nature to be of a singing and kind of being of that form. Now someone could be practicing Krishna consciousness 40 years, but still it's not his nature to cook. That's sort of not his real nature as such. Although Prabhupada wanted, and devotees as well, especially those who live in temple and ashram settings, they're quite versatile. They're quite versatile, and they should be versatile as well, because if you live in monastic setting and community like that, but yet it is not expected, or it is not the thing that everyone would know everything. One should know something of everything, but not everything of everything. So by nature, this is why Krishna is telling Arjuna, your nature is to fight, so fight. Do not give up that nature, and do not try to curb that natural instinct, fighting instinct spirit which you have. And those are different qualities, having like
someone who is very puffed up, very pride, vanity, full of ego, that can be worked upon, should be worked upon. All those should be quietened, like lust, anger, greed, envy, pride, illusion, all this thing, and more compassion, more and more kindness, more and more charitable, more and more truthful, loyal, more and more moral. These have to be worked upon, and through the practice of Krishna consciousness, one can quieten one's lower side, lower nature, say, and upgrade, be more compassionate and like that. But one shouldn't have this expectation or understanding that practicing Krishna consciousness for 10 years, 15 years, 20, 30 years and all, then yes, I will become a good singer or I will be able to. No, not necessarily. There are many who've been practicing for 30, 40 years. They understand the philosophy, they do chanting, they do japa, and they attend programs, but they struggle to give classes. They're not very good speakers as such. Again, not a problem. And it's not like, okay, your nature, because by nature, it's more like someone is introvert, someone is extrovert. Those sort of things. Huh? Although practicing Krishna consciousness, many introverts become extrovert, and many extroverts they change their style of extrovert nature. But do not expect by what nature one has developed. Krishna is saying stick to it, and do not just abruptly giving up is not the thing. Again, previously we discussed this. I ask a question again. Mm, If someone smokes 40 cigarettes a day, do you know someone who smokes 40 cigarettes a day? Okay. And is that a big number of cigarettes one is having on a daily basis? 40? Yeah. Okay. But say if you happen to know someone who smokes 40 cigarettes a day, is that sound like a big number? Huh? Do you know someone who smokes, and like on an average, how much would one smoke? Maybe a packet, 10, 20 would be big. Would That's still big enough? Okay. And that still is a big numbers, yeah? Huh? Now, if someone smokes 40 cigarettes a day, that's way big, huge number. And actually, we would find people, we will find Uh, just I'm trying to bring up this. What can repression accomplish? Hmm? What can repression accomplish? So if I read the translation once again, even a man of knowledge acts according to his own nature. For everyone follows the nature he is acquired from the three modes. We follow someone are naturally very clean, they maintain cleanliness. Someone are naturally quite lazy and all. So see, in society, thing is, especially in education sector and other places, or especially actually, I think in education sector and more like worldwide thing, perhaps. Um, the concept is, okay, if you beat a donkey constantly and make him a horse. Hmm. In Hindi they say, right? गधे को पीट पीट के घोड़ा बनाना. Like say, imagine you beat a donkey constantly and say you expect him to be becoming like a horse, okay, change like a horse and work like a horse. That doesn't work like that. So in education system, in some countries still it's not so gross level, but in some places it is quite gross. That okay, you in a class fill up with students more than 30, 40, 50, huh? Fill them up and bash them up with everyone same thing. Do not pay attention at a child's level, at an individual level. Just give them everyone the same thing and all, and expect everyone to come out the same and all. That doesn't work like that. तो ये ना गधे को पीट पीट के घोड़ा बनाना ऐसा होता नहीं है जीवन में. सब everyone is unique in their nature, everyone is unique in their sense, so they work according to nature one has acquired. Even what to speak like siblings. Same parents, but they have their own different tastes, natures, liking, disliking. And what to speak of just siblings, twins, twins, exactly look alike, but they have such different taste and likings and yeah. Mm. Mm. Yeah.
Yeah. Darren is saying even cats, his mom has got two cats, raised same way, same time and everything, but the cats, the both those cats, they have their different moods, different tastes, eat different, habits and all. So we all are quite unique in our nature and all. Uh, and this is something cannot be just changed overnight or cannot be just changed. Nature is like takes lifetime maybe to change. Mm. And again, qualities like lust, anger, greed, and noble traits as well. These can be improved or get got rid of. But one's nature just cannot be changed just like that. No. So coming back to the thing, and it is not good as well to try to make someone change. This is not a good habit also, and this is what like I find in Krishna consciousness practice. So, say someone comes in brahmachari ashram wanting to become a monk and live a monk life, then surely there are some general standards: cleanliness, discipline, huh? But then some monks, they are quite shy, they are quite reserved, some they are very open, they are very extrovert and all. So it's not like, oh, you are too extrovert, you become very quiet and shy. Oh, you are too quiet, you become this. Hmm? Yeah, the thing is, everyone should be disciplined. Everyone should be clean. Everyone should be having a good spiritual sadhana. All those things and all. But when it comes to someone maybe naturally very good in music, someone could be very good in cooking, someone could be very good in dealing with guests, someone could be very good in not dealing with people but dealing with things in maintaining. There's some devotees you just tell them, okay, maintain this property, maintain this ashram, maintain this garden and all. They love doing that, but they struggle a bit more with dealing with people, receiving guests and all. And some they find so nice when they have to receive guests, show guests the places and all. But if you ask them to fix tap, fix this, they don't like it. Some they like admin side of things, some they like the IT side of things and all, the IT setup within ashram and all. So these are the things, but then everyone is expected to have a good discipline. Yes, that everyone is expected. No. So we shouldn't try to play with someone's nature. Generally, we see what when in relationship, uh, one partner, uh, when relationship begins, it the heavy thing is physical attraction. That's a very heavy factor, and when one is very much physically attracted, the person tries to see anything of the other person as to be good. Okay, no, this is a good quality. And even if something doesn't appear to be really good as well, I can deal with it. I will manage, I will adjust. It's okay, not a big thing. Overlook any small, any those things. But then when in relationship, those small things, they can become big. Mm. And when certainly there's the relationship has been formed, say, okay, we write in Facebook, okay, we are in a relationship, say, just saying. And then from then on, people start taking each other for granted. And from there on, oh, you should be like this, you should be like that, change this is not so good and all, subtle way or in a very gross way. Again, if someone is um, like speech wise not good, so that correction should be done. But let person be his own. Let him be his her own and gradually evolve. This is what Krishna is trying to say. You are a fighter. Your zone is to fight. Let be yourself. Hmm? And repression. So now coming to this thing, someone smokes 40 cigarettes a day. Any part of the world, it's a big number. 40 cigarettes. Huh? Now, what advice will you offer to that person to so that the person quits smoking? You want the person to quit smoking. Anyone smoking 40 cigarettes a day surely is going to have some health problems. huh? So what advice would you offer? So if you Darren is saying expensive, if we tell him that okay, 40 cigarettes, this much money you are spending, so uh,
do if you quit smoking, then you will be saving money and you won't be quitting this much. And do you think the person will pay good heed to it? Uh, So therein is polite enough or honest enough. He's saying no because the person knows even if it's expensive, he's addicted to it. Mm. Addiction is a strong thing. See, such a strong thing. He knows. Okay, I'm ruining my health. Uh, yeah, it changes nature as well. It has an influence. Definitely, it has an influence on one's psychology, one's thought process, one's behavior, one's outlook, one's action in society, one's dealing with people and all. It changes altogether. I mean, one see what we see in movies and all, the way the stars, British stars or Hollywood or Bollywood stars and all, the way one takes a cigarette in hand, lights it, smokes it, one naturally that brings a sense of I'm cool, or I'm a don-like personality, I'm a mafia-like, or I'm a that sort of personality. Yeah, glamorized it. Yeah, it comes along with it. And this is why in devotional settings, in Vedic lifestyle, this dress, dhoti kurta, and all this brings a sense of calmness. This brings a sense of peace. This brings a sense of sanity. uh, the person, and it helps ones in the practice in advancing in spiritual life. So if you tell someone smoking 40 cigarettes a day, and if we tell him, oh, quit smoking. Why? Why do I quit smoking? Well, you are spending this much money. He wouldn't pay it. He may take loan, or he may stop. And there are people who would stop eating 3 times meals. They may cut down 2 times meals, but they wouldn't stop smoking. They're so addicted to it. So any other point, what would you advise? Because see, smoking 40 cigarettes. Okay, any other? Let's see here more. What else advice would you offer, Darren? Or Anuja Diksha Archana. Okay, Darren says it will give the person wrinkles. Again, the person for in order to get the cure for wrinkles, he may go to a pharmacy, a shop, and he may get something for makeup or to apply. Huh? He, again, if you he wouldn't quit smoking, I doubt. Even well, everyone who buys smoking cigarette packet, they know it's very clear, drawn and in writing. It's upfront. Huh? Yeah, but what one thing? How about if you tell him, come, don't take 40 cigarettes, take 39. Uh, compromise or improve, whichever way you see. Yeah, compromise as well, but compromise where? Compromise, it's like 40 to 39. It's not more of a compromise, it's a big change, big improvement from 40 to 39. And this is something doable. This is something achievable or agreeable, or he might he pay heed to it. Yes, from 40 come to 39. He's not spent saving much on money, he's not saving much on health, he's not saving much on his behavior, but this is a big boost in his confidence. This will give a big boost in one's confidence. Otherwise, those who are into smoking, drinking, or something like that, there's the withdrawal symptoms, right? Abruptly giving up. So abruptly, someone coming from 40 to 20, he will go like bonkers. His mind will be all over the place. He will go so much in agitation because the nicotine, the drugs will, the brain will want that drug substance. But from 40 to 39, the brain can handle it, and the person will get that confidence. Yes, I can take one less. I can take one less. For a week, he can try 40 to 39. Then next week, alternate days, he can take 39 and 38. Hmm? Alternate days, take 39, 38. The week after, whole week 38. Wow, that's a big thing. Two down, two down. And imagine the when the person comes like this,
more different styles. This is like playing with his mind as well and gaining confidence and not letting the mind as well feel low. Not cheating the mind as well, or not feeling the mind that okay, you're being fooled, but still winning, still applying some intelligence and letting the mind give this message, okay, you are the boss, you are in control. And imagine the person when he comes down from 40 to 30 cigarettes. That would be a big milestone, right? That would be a big epic moment, a landmark for him. And if he knows, well, I can come from 40 to 30, then surely I can come from 30 to 20 as well, or 25 as well. And he would be able to see the improvement in his health, in his relationships, finance wise, more peace, more good sleep, good skin, good diet. hmm, he would be able to notice all of that. So the point I'm trying to again say, this is we are just trying to formalize a deal or say, in practical life, inspiration and efforts are required to some for someone to come from 40 to 0. And this is where uh, the company of wise people, company of inspiring people, motivating people is very required, very much required, and very helpful, because they can keep that person in the war. They can keep him carrying on, mm, not feeling low. Also, from 40 to 39, something else they can provide to his mind to divert the mind from going into smoking habits, to divert the mind. So this is why, like, repression is not a good thing. A volcano erupts, right? Then if we constantly try to pressure something and hide and cover up, and what will happen? One day a volcano will come out. Anger. Some people, they rarely get angry. They will be fine throughout the year. But once or twice when they get angry like anything. Because so much of anger is being built up, built up, built up. And when it comes out, everything then comes out in one go. So repression is not good in societal dealings as well. A spiritual person is one who is open, who is broad-minded, one who is not judging. Imagine if we go to a care center, a person, and when we start talking, and the person straight away starts judging us. The person, what do we anticipate? Like, what is going on? Is Krishna listening to Arjuna or Krishna judging Arjuna? Uh, when we have a dialogue on some subject matter with someone, what would we like? Would we like the person to listen us or to judge us? Listen. Krishna is listening Arjuna, he's not judging Arjuna. Uh, and some people, they listen only to respond back, to reply back. Some people listen only to reply back, to look for a opportunity or moment. When can I now reply back? Okay, he's just stopped and I reply back to him. And some people listen to understand the person, to understand the situation, to understand the heart of the problem, to understand the person, to understand his problem. So we need both actually, sympathy and empathy, both. Both. Krishna is showing everything to Arjuna. Uh, just artificially repressing wouldn't help. But that doesn't mean that we just encourage illicit behavior. We encourage then just going on with drinking and that sort of culture, say, which is not very good for one's body, mind, and soul. Uh, so gradually building up. Okay, any thoughts, any questions or comments? Ashish, the smoke example that you provided, that is based on a quality, right? But Based, mm, based on qualities or
But what if, like, if somebody is caring, if somebody is in, everybody of us, everyone, each one of us is in modes of nature, ठीक है? तो वो मोड में आशीष, the more I am reading of Bhagavad Gita, the more I am understanding myself. ठीक है? तो भी मैम अब मन मारो वो दिख रहा है कि the mode that I possess, I'm not liking it now. Now that I get to know more of myself, I'm not liking the mode that I possess. तो भी मैं भी slowly slowly आप ही आपने निकालना हुआ है. Okay, so Or is the it more easy to come easy नहीं, like mode that we possess, can we come out of that mode? surely this is why Bhagavad Gita is there, right? We all are bound up in the three modes of material nature. And this is why devotional service, loving devotional service, japa and everything is there to come to our transcendental mode, to come to a transcendental mode, to transcendental nature, original, our sublime spiritual nature, to come to one's original consciousness. Mm. And practicing Krishna consciousness, one wouldn't start hating or disliking oneself as such. One would know that yes, I am fallen, I'm low, carry low energy, but then there won't be a sense of hatred, say, with oneself. One would know that yes, I am somewhere, I am not in the right space, the right spirit, the right thing. And again, practice, it is more of a, as we advance in Krishna consciousness, we have to go more deep, more introspecting in our nature. But so much so that it helps us become a better devotee, uh, that it helps us become a better devotee for that purpose. Otherwise, it will lead us into another sort of self obsession. This is why little bit of analysis is good, but too much of analysis is no good. And give ourselves time as well and continue in the practice of Krishna consciousness. Gradually, we all are in the process of purification, right? We all are getting purified. But if we just like say when we take a medicine and all, so we take a tablet and we let the tablet work, not the whole night. And next day morning we see okay how it's going on. अभी दवाई बुखार की दवाई ली है फिर लेने के बाद क्या हर आधा एक घंटे में चेक करते रहते हैं क्या फीवर कैसा है फीवर कैसा है फीवर कैसा है अभी टेम्परेचर चेक करो तो उसको करने होने दो ना अभी समझो कुछ बना रहे हो कुछ उबाल रहे हो या कुछ सब्जी या कुछ ऐसा बना रहे हो और उसमें फिर बार बार ही देखते रहो कि अभी पका गया अभी पका गया हाँ अब समझो ओवन में कुछ डाला और फिर बार बार का दरवाजा खोलते रहो देखो अभी गर्म हुआ क्या गर्म हुआ क्या सो लेट इट कम लेट इट give it the whatever time somewhat appropriate time और इसीलिए ना constant association is required constant engagement और good engagement is required जब तक हम engaged रहेंगे ना तो फिर इतने ऐसे विचार इतने आएंगे नहीं जब हम किसी ना किसी प्रकार से सेवा में जुड़े हुए रहेंगे और हम अपने आप में देखेंगे ना प्रोग्रेस इम्प्रूवमेंट हम सबको अपने आप में देखेंगे अनुभव करेंगे कि हाँ प्रोग्रेस तो है और अच्छा है ना पता चले कि हम कितने बद्ध है ये अच्छी बात है सोचो अगर यही ढका हुआ रह जाए तो फिर क्या फायदा ये पता चलना भी अच्छी बात है ना और बस साधना में आगे बढ़ते रहिए नाम जप करते रहिए और भक्तों के संग में सेवा करते रहिए तो उससे सारा समाधान होगा धीरे धीरे आएगा ना so when we actually grow mature बहुत maturity बहुत growth चाहिए ना when we do a bit of introspection we realize और all this is to help us grow only ये सब हमें ग्रो करने के लिए है
एक टाइम आएगा जब we will see down the line कि yes, we've come a long way. So does this help? हाँ आशीष। भक्ति करते हुए ऐसा कोई नहीं बोल सकता, ऐसा वास्तव में नहीं कि भाई हेट्रेड खुद से ही, नो, खुद से या फीलिंग लो इज अनदर थिंग कि हाँ कमी है मेरे में, देखो कितना मेरा स्वभाव इत्यादि कैसा है, या अब पता चल रहा है कि मैं अपने आप को जान रही हूँ मैं कैसी हूँ, क्या मेरे भाव है, मनोस्थिति कैसी रहती है। हाँ उससे थोड़ा तो आएगा उस समय, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यक्ति अपने आप को ही हेट करने लगेगा ना। इनफैक्ट व्यक्ति अपने आप को जैसा भी हो और अप्रिशिएट करने लगेगा कि भगवान का नाम जप करना, बाप रे कितना दिव्य अनुभव है ये, और ये कितना दिव्य कृपा है कि हम माला कर सकते हैं, नाम जप कर पाते हैं। तो उसको वो आगे बढ़ाते रहेगा उसको। And ऐसा yes, भी it's completely understandable. Like for the past 35 years plus, I've been carrying this nature. So suddenly, I cannot expect the magic happening in a day. Yes. But और इस ये तो really तो बोलना भी कोशिश कि the one that I'm carrying, it's bad. It is not that good. I shouldn't be. तो और ज्यादा हाँ, अब एटलीस्ट पता तो चल रहा है। हाँ, और ये स्वभाव कहाँ से, संस्कारों से ना, इतने पूर्व जन्मों के संस्कार और फिर प्रकृति के गुणों से। हाँ इसीलिए देखिए जो बचपन से जिनको जितने जल्दी से ट्रेनिंग मिल सके बहुत बढ़िया है। इन्हीं को अगर बचपन से ही ट्रेनिंग मिल सके तो, और बचपन से ही मंदिर का माहौल वो, और वैसा ही कल्चर घर पे हो तो बहुत अच्छा रहता है एक्चुअली एडवांसमेंट में। बट फिर भी प्रोसेस इतना गजब का है, ज़्यादा नहीं लेकिन कई है जो 50 साल की उम्र के बाद आते हैं कृष्णा भावनामृत में, 40 की उम्र के बाद, 50-60 की उम्र के बाद, और बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बढ़िया परिवर्तन आता है उनमें, है ना। तो कोई एज या प्लेस, है ना, स्त्री शरीर में हूँ पुरुष शरीर में हूँ, ये सब कोई बाधक नहीं है, कोई ये सब कोई बाधक नहीं है कृष्णा भावनामृत के अभ्यास में। और बस हमारी एटीट्यूड की बात है और हमारा संग का बात है कि इसमें हम कैसा संग ले रहे हैं, कितना हम खुद में वो परिवर्तन भी लाना चाहते हैं, तो फिर सभी कुछ हमें हेल्पफुल ही लगेगा। एज भी कहो अगर, ये शरीर भी अगर कहो, कुछ भी कहो, सभी कुछ हमें हेल्पफुल ही लगेगा कि भगवान की ओर ले जाने के लिए। ओके, डज दिस हेल्प? हाँ आशीष। Okay, let us read next. हाँ, हम खुद को ही टॉलरेट कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम औरों को टॉलरेट कर रहे हैं, हम खुद को भी टॉलरेट करना सीखें, और हाँ हम भी कर रहे हैं और भी तो हमें भी तो टॉलरेट कर रहे हैं ना और लोग, ऐसा नहीं है कि हम ही टॉलरेट कर रहे हैं। और कई बार देखे, अगर हम देखेंगे ना, हमें औरों को टॉलरेट करना फिर भी थोड़ा आसान लग जाएगा, औरों को हमें टॉलरेट करना कितना कठिन होगा, ज़्यादा कठिन हो जाएगा, औरों को हमें टॉलरेट करना और ज़्यादा कठिन हो जाए। ठीक है। इंद्रियस्य ये इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्नवसम् आगच्छेत् तौ हि यस्य परिपन्थिनौ। हर्षा पढ़ पाओगे क्या? हाँ जी. There are principles to regulate attachment and aversion pertaining to the senses and their objects. One should not come under the control of such attachment and aversion.
because they are stumbling blocks on the path of self-realization. पढ़िए तात्पर्य। Those who are in Krishna consciousness are naturally reluctant to engage in material sense gratification. Those who are in Krishna consciousness are naturally reluctant to engage in material sense gratification. But those who are not in such consciousness should follow the rules and regulations of the revealed scriptures. Unrestricted sense enjoyment is the cause of material engagement. But one who follows the rules and regulations of the revealed scriptures does not become entangled by the sense objects. For example, sex enjoyment is a necessity for the conditioned soul, and sex enjoyment is allowed under the license of marriage ties. According to scriptural injunctions, one is forbidden to engage in sex relationships with any women other than one's wife. All other women are to be considered as one's mother. But in spite of such injunctions, a man is still inclined to have sex relationships with other women. These propensities are to be curbed. Otherwise, they will be stumbling blocks on the path of self-realization. These propensities are to be curbed. Otherwise, they will be stumbling blocks on the path of self-realization. As long as the material body is there, the necessities of the material body are allowed, but under rules and regulations. And yet, we should not rely upon the control of such allowances. One has to follow those rules and regulations. And yet, we should not rely upon the control of such allowances. One has to follow those rules and regulations unattached to them, because practice of sense gratification under regulations may also lead one to go astray, as much as there is always the chance of an accident, even on the royal roads. Although they may be very carefully maintained, no one can guarantee that there will be no danger even on the safest road. The sense enjoyment spirit has been current a very long time, owing to material association. Therefore, in spite of regulated sense enjoyment, there is every chance of falling down. Therefore, any attachment for regulated sense enjoyment must also be avoided by all means. But attachment to Krishna वो लाइन फिर consciousness, से पढ़ो। Therefore, any attachment for regulated sense enjoyment. therefore, in spite of regulated sense enjoyment, there is every chance of falling down. Therefore, any attachment for regulated sense enjoyment must also be avoided by all means. But attachment to Krishna consciousness, or acting always in the loving service of Krishna, detaches one from all kinds of sensory activities. Therefore, no one should try to be detached from Krishna consciousness at any stage of life. The whole purpose of detachment from all kinds of sense attachment is ultimately to become situated on the platform of Krishna consciousness.
पढ़िए अनुवाद हर्ष। There are principles to regulate attachment and aversion pertaining to the senses and their objects. One should not come under the control of such attachment and aversion because they are stumbling blocks on the path of self realization. बहुत सुंदर अनुवाद तात्पर्य। बहुत मैच्योर्ड वाली चीजें हैं भागवत गीता में वास्तव में। और देखिए ये बड़ा वो लगता है ना, भगवान कब बोले, ये 5000 वर्ष पूर्व है, जो कि आज के डेट में कितना लगता है सोसाइटी में एप्लीकेबल जैसा हो। और ये आज की बात नहीं है, 1970 में भी जिन्होंने भागवत गीता यथारूप वांछा ना पढ़ा ना, उनको तब भी लगा कि बाप रे ये तो आज के डेट में कितनी प्रैक्टिकल है, कितनी रिलेटेबल है? और भी प्रभुपाद ने भी जब अपने टाइम में वांछा पढ़ा बोले भाई ये तो कितनी जबरदस्त है, कितनी प्रैक्टिकल रिलेटेबल है। आशीष फिर की आप ग्रो कर रहे हैं, आपन लागा ह्यूमंस वी आर ग्रोइंग वेरी आप तो और पीछे ही जाते जा रहे हैं। हाँ ठीक है, ग्रोथ तो देखिए चेतना की होती है ना। ओवरऑल देखें तो ठीक है, संसार में हम थोड़ा, संसार में देखिए ये फ्रिक्शन चलते ही रहता है, आगे पीछे आगे पीछे। कई दृष्टिकोण से देखें तो हम ये पीछे ही जा रहे हैं, लेकिन उस पीछे जाने में भी गति। आज देखो 1970 में कितने, आप देखो 1930 में, 40 में, 50 में कितने वेजिटेरियंस थे अमेरिका में। अमेरिका में रहते हो ना, देखो अमेरिका में तब कितने वेजिटेरियंस थे, और आज के डेट में देखो। ऑल्दो और काफ़ी चीज़ें बहुत बढ़ भी रही है, लेकिन फिर भी साथ ही साथ कहीं ना कहीं कुछ और भी चल ही रहा है ना ऐसा। तो अधिकतर तो हम ठीक है नीचे की ओर ही जा रहे हैं या क्या, लेकिन कहने का ये 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने अर्जुन से कहा, कितना सटीक बैठता है, कितना सटीक आज के डेट में भी और आगे टाइम में भी। और हाँ जिस हिसाब से जा रहा है, देखिए कोई है क्या बोलते हैं ना, एक अंग्रेजी में एक एक्सप्रेशन है, लर्निंग थ्रू द स्कूल ऑफ हार्ड नॉक्स। मतलब कोई बहुत लात खा खा के समझता है, लेकिन फिर लात खा के इतना कमजोर हो जाता है ना व्यक्ति, कि समझ के भी उसके पास शक्ति नहीं रहती है कुछ करने की, कुछ सुधार या परिवर्तन लाने का। इसलिए हमें उस तरह से नहीं समझना है कि भाई हम लात खा खा के समझे और फिर हमारा दिया ही बुझ जाए, कि कोई इतनी शक्ति नहीं रहे हमें कुछ परिवर्तन सुधार लाने का, है ना। और बुद्धिमान व्यक्ति तो जो है, जो थोड़ा बहुत में ही समझ जाए, थोड़े झटके खा के ही समझ जाए या बिना झटके खाए ही समझ जाए, जो दूसरों को देखते ऑब्जर्व करके ही समझ जाए, वो बहुत बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है। बाकी संसार में देखिए होप तो कभी लूज नहीं करनी चाहिए ना, भले कोई भक्ति कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, एक बेयर मिनिमम तो होप तो सभी को रखनी चाहिए। इसीलिए ना जो भक्ति नहीं भी करते ना, वो भी होप पे ही आश्रित है, और ठीक है हमें उनको उनके हाल पे कई बार छोड़ना भी चाहिए, क्योंकि लेट देम टाइम टू ग्रो, गिव देम टाइम टू ग्रो, और खुद अपने आप में हम वर्क करते चले। एक्चुअली सारा काम तो खुद पे ही करने का है, पूरा का पूरा खुद ही पे काम करने का है। और ये तो कृष्ण की कृपा है कि फिर हम सत्संग में ऐसे ये आयोजन, सारा कुछ तो ये भागवत गीता बगैर थोड़ी ना कुछ किसी को समझाने के लिए, ये तो मैं व्यक्तिगत रूप से अपने को समझाने का प्रयास है, कितना मैं अपने आप को खुद को स्वयं को समझा सकूं और कितना मैं उस कल्चर में स्वयं को ला सकूं। ये है खुद को कितना मैं एजुकेट हम कर सकें। तो बहुत सुंदर और मैच्योर्ड। हाँ ठीक है, संसार तो देखिए अधिकतर रूप में तो
बहुत ही तमोगुण रजोगुण में है ही ना, और इसमें इतने शॉकिंग की क्या बात, अनादिकाल से ही तो ऐसा है ना, चला आ रहा है अनादिकाल से ऐसा। और खैर वो फिर कोई कैजुअली लेने की बात भी नहीं है। Individually we have to wake up then. And individually we are waken up, we are waking up, then individually we are playing the role na, and we wouldn't get much affected. And surely through our individual efforts there will be some more inspiration for others as well to take. हो गई। तो अनुवाद एक बार देखें, बहुत सुंदर लगता है मेरे को ये अनुवाद और तात्पर्य। अवर्जन मतलब क्या अनुवाद में है ना? Disliking. स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिसलाइक, डिस्टेस्ट, किसी से घृणा, हेट करना। एक तो नापसंद हो गया वो फिर भी थोड़ा लाइट है, लेकिन ये कि घृणा करनी वो बहुत ज्यादा ना। तो अवर्जन एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिसलाइक, और अटैचमेंट राग ना, वो बहुत ज्यादा अटैचमेंट। तो देखिए ये राग द्वेषो व्यवस्थितो ना, राग और द्वेष। सो द प्रिंसिपल्स टू रेगुलेट, रेगुलेट मतलब होता है ना, देखो ये पंखा का होता है ना रेगुलेटर, वो क्या करता है, स्पीड को रेगुलेट करता है कि नहीं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। तो वैसे ही हमारा अटैचमेंट और अवर्जन, उसको रेगुलेट करने के लिए प्रिंसिपल्स हैं pertaining to the senses and their sense objects। इंद्रियों पे संयम का पाना, काबू पाना, ये कोई हंसी मजाक का काम नहीं है ना, और इसके लिए तरीके हैं, तो वही प्रिंसिपल्स हैं, तरीके हैं, नीति, माध्यम, तरीके किस हिसाब से इंद्रियों पे ज्यादा राग उत्पन्न ना हो, इंद्रियों से, इंद्रियों को इंद्रिय विषयों पे इतना राग उत्पन्न ना करा जाए। जैसे किसी को खाने पीने में खूब पसंद है, घूमने फिरने में, अब किसी चीज से इतनी भी हमें घृणा ना होने लगे। So one should not come under the control of such attachment and aversion because they are stumbling blocks on the path of self-realization, है ना? तो ना ही कोई चीज को लेके अति आसक्त, और ना ही किसी चीज को लेके अति डिटैच सॉर्ट ऑफ। और ये जो बात चल रही है ना, ये भक्ति की बात नहीं है, कि ऐसा नहीं कि जो बोलते हैं ना एवरीथिंग इन मॉडरेशन, अति में कुछ नहीं करो, सब कुछ बराबर से लिमिट से करो। तो ये सारी चीजें ना व्यवहारिक जीवन की, अब जैसे यही उदाहरण शराब या सिगरेट की बात ना, तो पता है कि भाई ये अच्छी चीज नहीं है, तो इसीलिए चलो मॉडरेशन में करो, इतना ज्यादा अटैच मत हो जाओ इससे, मॉडरेशन में, हाँ, मॉडरेशन में आ जाओ, थोड़ा तो ग्रो हुआ वहां से, हाँ। और अवर्शन ना, तो किसी व्यक्ति या किसी पे इतनी ज्यादा भी घृणा या हिंसा नहीं रखे। वो हमारे ये सब ज्यादा अटैचमेंट और ज्यादा अवर्शन क्या ना, हमारे हृदय को बहुत कठोर बना देगा, या हमें ही बहुत रिजिड बना देगा। तो और वो फिर ग्रोथ के लिए अच्छी बात नहीं है ना, ग्रोथ के लिए अच्छी बात नहीं है। तो भगवान अर्जुन को वही कह रहे हैं कि देखो तुम अपने क्षत्रिय में भी और ऐसे करके अपने स्वभाव से इतना भी जटिल या अड़ियल या वैसे मत बन जाओ। Those who are in Krishna consciousness are naturally reluctant, unwilling to engage in material sense gratification। और ये नेचुरल आता है, जैसे ही नाम जप करने लगेंगे, भागवत गीता और पढ़ने लगेंगे ना, तो देखो नेचुरली साधु संग में रह के जितना ज्यादा से ज्यादा संग करेंगे, भक्तों के संग में साधना और में जुड़ेंगे हम, तो फिर नेचुरली टीवी देखने का, पिक्चर हॉल जाने का, बाहर खाना पीना इत्यादि, ये सब इतना आकर्षण नहीं रहेगा उनका, इतना आकर्षित नहीं होंगे, हाँ? लेकिन जो ऐसे चेतना में नहीं है, तो ठीक है, उनको कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ शास्त्रों के नियम कानून माने ना, रजोगुण तमोगुण कैसे भी, मतलब कुछ ना कुछ तो नियम कानून, कुछ व्रत इत्यादि ये सब करें, लेकिन कृष्णा भावनामृत में जो एकादशी का पालन करते हैं और बाकी करते हैं, भक्ति में जीवन बिताते हैं, तो उनके लिए थोड़ा नेचुरल हो जाता है सेंस कंट्रोल करना।
क्योंकि वो सेंसेस को भगवान की सेवा में लगा देते हैं ना, जिसमें बहुत दिव्य आनंद, बहुत दिव्य रस मिलता है, तो उस हिसाब से नेचुरल हो जाता है। लेकिन जो भगवान की सेवा में नहीं लगाए सेंसेस, तो ठीक है, फिर कुछ ना कुछ धर्म के उपासनाओं में जुड़ो और कुछ ना कुछ व्रत नियम कानून का पालन करो और अपने आप को थोड़ा संयमित रखो। बट प्रभुपाद देखिए कितना सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। सबसे बड़ा जो संसार में जकड़ पकड़ है, जो बंधन कहूँ ना, जो है वो तो ये स्त्री पुरुष का परस्पर आकर्षण। ये सबसे बड़ा नॉट बोलते हैं ना, रस्सी या गांठ। हाँ, हाँ, हृदय में ये जो गांठ है ये बहुत स्ट्रांग यही बन जाती है ना, स्त्री पुरुष का परस्पर आकर्षण और शारीरिक स्तर पे। इसी से तो संसार का विस्तार है पूरा का पूरा, इसी से पूरा का पूरा फिर विस्तार है संसार में। और ये भी किस लिए? सुख की खोज में ही, सुख की खोज में ही। अब संतान उत्पत्ति वो भी क्या है ना, विस्तार ही है ना। अ, समझो संतान उत्पत्ति क्या विस्तार ही है ना, एक्सपांशन ऑफ द फादर। चाइल्ड इज व्हाट इज एन एक्सपांशन ऑफ द फादर, और एक्सपांशन की भाई जॉय या हैप्पीनेस के लिए। अगेन संतान उत्पत्ति या ये कोई गृहस्थ आश्रम, इस सब की कोई मना नहीं है, लेकिन इसको हम कृष्णा भावनामृत रूप दें तभी बढ़िया है। तो देखिए इस संसार में कितना आकर्षण, और जो सबसे प्रबल आकर्षण है वो ये स्त्री पुरुष का शारीरिक आकर्षण स्तर पे जो आकर्षण है बहुत प्रबल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसी से सारा बंधन और बाकी सब उसी से विस्तार है। तो अब समझिए कोई अगर भले ही गृहस्थ आश्रम में रह के और नियम कानून पालन करते हुए विधि विधान पूर्वक इत्यादि जीवन व्यतीत भी करे, तो भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे तात्पर्य में कितना सुंदर है, क्या एक्सीडेंट्स हैपन ऑन द रॉयल रोड एज वेल। तो ऐसा नहीं है कि कोई कितना भी स्क्रिप्चरल इंजंक्शंस और को फॉलो कर रहा है और सेफ प्ले कर रहा है इत्यादि, बट स्टिल दैट सेफ इज नॉट सेफ इनफ। इसीलिए देखिए वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था कितनी बढ़िया है। शुरू में ब्रह्मचारी जीवन, फिर गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन मतलब बाउंड टू बी अटैच्ड। गृहस्थ जीवन मतलब बाउंड टू बी लिविंग इन डुअलिटी। गृहस्थ जीवन मीन्स बाउंड टू गो फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। बहुत कठिन है ना, बाप रे, गृहस्थ जीवन में कितनी औपचारिकताएं, कितनी ड्यूटीज हो जाती है, सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति लेके कितना कुछ, घर परिवार के प्रति लेके सब कुछ संभालना बहुत भारी पड़ जाता है ना, घर संभालना, परिवार संभालना इत्यादि इत्यादि। तो उसमें राग द्वेष तो खूब आते रहता है, अटैचमेंट, अवर्शन। अब कोई उसको, चलो भाई हम सेफली प्ले करते हुए, सेफली प्ले करते हुए वी वोंट इंडल्ज मच इन सेंस ग्रेटिफिकेशन, वी वोंट इंडल्ज मच इन आउटसाइड ड्रिंकिंग, eating, going this, that, and all so many things. And within ourselves as well, we won't indulge. एक दूसरे में हम इतना फंसेंगे नहीं, इतना हम बंधेंगे नहीं। तो भी क्या है, फिर भी बंधन तो है ही ना, और कोई गारंटी नहीं है ना भाई। एक दूसरे के साथ ये व्यवहारिक जीवन या समझो पति पत्नी का जीवन में बंधन तो है ही। और कभी भी ना ये आसक्ति तो बहुत प्रगाढ़ ही है ना। अगेन कोई अब ये नेचुरल है ना आसक्ति होना, लेकिन बात ऐसी है कि भाई we become spiritual and the others should also become spiritual. If the partners are spiritual, then no, not a problem. Then exit route is more easily attainable कहने का है। तो गृहस्थ आश्रम से फिर एग्जिट कहाँ पे है? वानप्रस्थ ना। गृहस्थ आश्रम से निवृत्त हो, वानप्रस्थ की ओर जाए। और वानप्रस्थ आश्रम मतलब फिर से ठीक है, गृहस्थ में तो त्याग तपस्या इतना कर नहीं पाते हैं, है ना, आध्यात्मिक, और बहुत बन जाते हैं और बहुत आसक्ति और ये विरक्ति या बहुत द्वेष भी हो जाता है, अवर्शन और अटैचमेंट खूब हो जाता है। अब वर्णाश्रम में जाके वॉलेंटरली फिर हम त्याग तपस्या करें, है ना, 50 की उम्र के बाद। इसीलिए वैदिक सभ्यता के अंतर्गत 50 की उम्र के बाद व्यक्ति अपने आप को थोड़ा सा डिटैच, थोड़ा सा लाइट, सोसाइटल फैमिली ऑब्लिगेशंस ड्यूटीज और से थोड़ा फ्री करना चाहिए।
वैदिक सभ्यता में तो ऐसा ही है, 50 से 75 की उम्र तक समझो, है ना, और अपने आप को और तैयार करे, पक्का करे साधना में, और फिर 75 से फुल साधना में जाए, इस हिसाब से कि भाई शरीर छोड़ूं और भगवान के दर्शन ही पाऊं। तो सोसाइटी ऐसा ही लेड आउट होना चाहिए, बट आजकल के जीवन में क्या है ना, पूरा कौतूहल सा है, बहुत अनऑर्डरली है। अ, समय पे पढ़ाई लिखाई इतनी लंबी, बाप रे कितनी लंबी पढ़ाई लिखाई बताइए, तो सब कुछ दे रही, और वो पढ़ लिख के भी ज्ञान भी कहाँ हो मिल रहा है, चरित्र कहाँ निर्माण हो रहा है, इतने पढ़ लिख के भी इनसिक्योरिटी देखो कितनी ज्यादा है ना, जेलिसी कितनी ज्यादा है। तो मतलब जो हम पढ़ लिख रहे हैं काम का नहीं है इतना, या जिस तरह से हमें पढ़ाया लिखाया जा रहा है, कहीं ना कहीं तो कुछ कमी है ही। ज्ञान भी इतना नहीं मिल रहा देखो, और ऐसा लगता है कुछ आता ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है, और कितनी इनसिक्योरिटी और वो इन्फेरिटी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इत्यादि कितना कुछ ऐसा चलता ही रहता है। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, देखो अर्जुन, इतना तुम किसी चीज में हम अपने आप को बांधे नहीं, ना ही किसी चीज के प्रति, व्यक्ति या वस्तु के प्रति इतनी ज्यादा हमारी रुचि, आकर्षण, अटैचमेंट हो जाए, और ना ही डिटैचमेंट। और ये सारी चीजें ना संसार में व्यवहारिक के हिसाब से, ये चीजें भक्ति पे लागू नहीं होती है। कि ऐसा नहीं, कि कोई नहीं कह सकता कि आई एम टू अटैच टू प्रैक्टिसिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस, आई एम वे टू अटैच टू डिवोटी एसोसिएशन, है ना, मैं बहुत ज्यादा ही डिवोटी ले एसोसिएशन लेता हूँ। अरे भाई बहुत ज्यादा कोई डिवोटी एसोसिएशन नहीं ले सकता, कोई नहीं बोल सकता मैं बहुत ज्यादा ही माला करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा ही भागवतम पढ़ता हूँ। ना बाबा, कोई पढ़ ही नहीं सकता ज्यादा भागवतम, मैं बहुत ज्यादा ही भक्ति करता हूँ ना। ना। और ना ही ऐसी है कि भाई बहुत कर ली भक्ति अब घृणा ना, तो ये इसके लिए नहीं, ये तो हमें संसार में ड्यूटी ओरिएंटेड कर्म योग ना अध्याय, तो अपने ड्यूटी में बस ड्यूटी को ड्यूटी के हिसाब से निभाओ, डू द नीडफुल, यही मुख्य बात है। और उसमें इतना फंस नहीं जाए, रच पच नहीं जाए। नेहा, कभी रसोई बनाते तुम्हारा हाथ जला है क्या? जाता है क्या, आग में कभी लगा होगा? हाँ। हाँ, बहुत बार। तो बहुत बार थोड़ा ना। कम होता है विद प्रैक्टिस। हाँ, लेकिन देखो कभी आग में हाथ चला भी जाए तो क्या होता है, इंस्टेंट रिएक्शन क्या रहता हटाने का। है ना, हटाने का एकदम नेचुरल है ना, इंस्टेंट रिएक्शन की पता है भाई, हाथ आग में हाथ गया जल जाएगा, और ये नेचुरल हटाने का रहता है। हम्म, ऐसे ही समझो कोई बिजली में चला गया, गर्म पानी में छू लिया, नेचुरल रहता है ना हटाने का। उसी प्रकार से ये भोग वासना में, सेंस ग्रेटिफिकेशन में, है ना, थोड़ा लूज लाइफ, लूज में क्या है, अनरेगुलेटेड इनडिसिप्लिन लाइफ में, तो नेचुरल हमारी साधना क्रम में आएंगे ना, तो प्रवृत्ति होगी कि वहां से हम फ्री हों, अपने आप को हटाएं, बाहर निकालें। तो किसी भी चीज में हम इतना ज्यादा अटैच ना हो जाए, किसी भी चीज में हम इतना ज्यादा अटैच ना हो जाए, और ना ही किसी चीज में हम इतना ज्यादा घृणा भी करने लगे। तो अगर ज्यादा अटैच होंगे तो फिर आगे चोट भी ज्यादा खाएंगे, ज्यादा घृणा करेंगे तो फिर और फ्रस्ट्रेटेड ही फील करे रहेंगे। इसीलिए एक कूल बैलेंस बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है ना। तो जीवन में कई चीजें जैसे बोलते हैं ना, टच एंड गो के हिसाब से, टच एंड गो के हिसाब से, उसमें इतना रच पच नहीं जाए, फंस नहीं जाए पूरा का पूरा। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ओके, एक और पढ़ते हैं और फिर एक प्रश्न भी करेंगे। हाँ, 35वां पढ़ते हैं, 36वां शायद आज नहीं पढ़ पाए, और 35वां भी देखते हैं कितना कर पाए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परधर्मो भयावह। बहुत सुंदर, बहुत गहरा भी है, बहुत प्रैक्टिकल भी एक्चुअली। मेरे तो वास्तव में समझ नहीं है भागवत गीता की, और इतने सिद्धांतों की या गहराई में
जितना भी हम समझ सकें, ठीक है। नेहा आप पढ़ोगे क्या? अनुवाद पढ़िए। It is far better to discharge one's prescribed duties, even though faulty, than another's duty perfectly. Destruction in the course of performing one's own duty is better than engaging in another's duty. For to follow another path is dangerous. दीक्षा आप पढ़िए तात्पर्य। दीक्षा पढ़ पाओगे क्या? ओके, हर्ष आप पढ़िए तात्पर्य। One should therefore discharge his prescribed duties in full Krishna consciousness rather than those prescribed for others. Materially, prescribed duties are duties enjoined according to one's psychophysical condition, under the spell of the modes of material nature. Spiritual duties are as ordered by the spiritual master for the transcendental service of Krishna. But whether material or spiritual, one should stick to his prescribed duties even up to death, rather than imitate another's prescribed duties. Duties on the spiritual platform and duties on the material platform may be different, but the principle of following the authorized direction is always good for the performer. When one is under the spell of the modes of material nature, one should follow the prescribed rules for his particular situation and should not imitate others. For example, a Brahmana who is in the mode of goodness is non-violent, whereas a Kshatriya who is in the mode of passion is allowed to be violent. As such, for a Kshatriya, it is better to be vanquished following the rules of violence than to imitate a Brahmana who follows the principles of non-violence. Everyone has to cleanse his heart by a gradual process, not abruptly. Everyone has to cleanse his heart by a gradual process, not abruptly. However, when one transcends the modes of material nature and is fully situated in Krishna consciousness, he can perform anything and everything under the direction of a bona fide spiritual master. In that complete stage of Krishna consciousness, the Kshatriya may act as a Brahmana or a Brahman may act as a Kshatriya. In the transcendental stage, the distinctions of the material world do not apply. For example, Vishwamitra was originally a Kshatriya, but later on he acted as a Brahman, whereas Parashuram was a Brahman, but later on he acted as a Kshatriya. Being transcendentally situated, they could do so. But as long as one is on the material platform, he must perform his duties according to the modes of material nature. At the same time, he must have a full sense of Krishna consciousness. पढ़िए अनुवाद। It is far better to discharge one's prescribed duties, even though faultily,
then another's duties perfectly. Hmm. Destruction in the course of performing one's own duty is better than engaging in another's duties. For to follow another's path is dangerous. बहुत बहुत गहरा बात है और बहुत अगेन बहुत प्रैक्टिकल टीचिंग्स लर्निंग्स है सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस ना। क्या बोलते हैं हिंदी में, जिसका काम उसी को साझे। इसी को साझे। है ना, जिसका काम उसी को साझे। तो और ये वैदिक सभ्यता ना वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत। तो वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत क्या होता था कि भाई वर्ण और आश्रम, 4 वर्ण और 4 आश्रम। आश्रम क्या, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। और वर्ण क्या हुए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हुए। तो 4 स्पिरिचुअल क्लासेस और 4 स्पिरिचुअल ऑर्डर्स। तो अब ब्राह्मण का जो काम है वो ब्राह्मण का अपनी वृत्ति के अनुसार वो काम करता था। पहले समाज ऐसे लेड आउट ही था ना। हाँ, कि इसीलिए ना ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही निकलता था, क्योंकि समाज ही इस हिसाब से लेड आउट था कि ट्रेनिंग और उस हिसाब से सारा कुछ सोसाइटी में फंक्शनिंग था। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही निकलता, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही निकलता, जिस हिसाब से ट्रेनिंग और ये उनके साइकोफिजिकल नेचर समझो, स्वभाव इत्यादि। क्योंकि इतना ऐसा अभी तो सब कुछ लूज है ना, और पहले शास्त्रों का फॉलोइंग होता था, गुरुकुल थे ना। तो सब ब्राह्मण का बच्चा हो, वैश्य शुद्ध इसका क्षत्रिय का बच्चा हो, तो गुरुकुल में जाके शिक्षा लेते थे। थोड़ी बहुत शिक्षा शूद्र के लिए भी बेसिक थोड़ी बहुत रहती थी। और वो शिक्षा क्या बोलते हैं, ओवरऑल एडवांसमेंट, ओवरऑल मटेरियल और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस दोनों के लिए होती थी। और फिर नेचुरली ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण निकल जाता था, क्षत्रिय का क्षत्रिय, शूद्र का शूद्र और वैश्य का वैश्य। हाँ, और इस हिसाब से सोसाइटी बहुत स्मूथली फंक्शन भी करती थी। और इसमें ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय अगेन शूद्र इज अगेन नथिंग लाइक अ हेट्रेड सॉर्ट ऑफ थिंग, है ना। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए किसी को कोई मना नहीं है, बट संसार में थोड़ा सा प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन, प्रोग्रेसिव ग्रोथ के लिए ना, मटेरियल और स्पिरिचुअल या मटेरियल और इसके बैलेंस के लिए तो ये तो है ही। पर ये नेचुरल क्लासिफिकेशन है ना। हमारे शरीर में भी पैर का काम तो पैर ही करता है ना भाई, दिमाग थोड़ी ना करता, दिमाग दिमाग का काम करता है ना। हाथ हाथ के काम करते हैं, पेट पेट का काम करता है, ऐसे करके। तो जिसका काम उसी को साझे। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, देखो तुम क्षत्रिय हो बाबा, क्षत्रिय का धर्म करो ना। तुम क्षत्रिय का अभी ये छोड़ के तुम पूजा पाठ में बैठ जाओगे, नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा अर्जुन। तो भले तुम युद्ध में इम्परफेक्टली अगर तुम फाइट भी करो, बट वो परफेक्शन है तुम्हारे लिए, रादर देन तुम सोचो कि मैं परफेक्टली समझो ब्राह्मण बन जाऊंगा या परफेक्टली ये बन जाऊंगा। और आज के डेट में इतनी कलयुग ना, और सब ये कलयुग में तो बताते हैं शास्त्रों में कई जगह क्या, जन्म जायते शूद्र। क्योंकि हम सभी वर्णाश्रम सिस्टम तो है नहीं, सो वी ऑल आर एक्चुअली शूद्र, वी ऑल आर बॉर्न इन इग्नोरेंस। मेंटेलिटी तो हम सबकी ऐसी है, शूद्रवत मेंटेलिटी है। इतना घमंड, अभिमान, नॉलेज नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, क्लेanलीनेस नहीं है, गुड कल्चर नहीं है, इत्यादि एंड ऑल। तो अभी अर्जुन के लिए ये स्वैप करना ऐसे थोड़ी ना कि क्षत्रिय छोड़ के ब्राह्मण बन जाना या वैश्य बन जाना और हो जाएगा, नहीं। वो स्वभाव तो है ना क्षत्रिय का, वो स्वभाव तो है ही। अभी ये छोड़ भी दे, युद्ध करके चले जाए, छोड़ो सोचिए युद्ध नहीं करें, वन में या कहीं चले जाए, लेकिन वहां भी तो लोग मिलेंगे, वहां भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा, फिर उनको सीधा क्या जाएगा, तलवार निकालूं अपनी, तलवार निकालूं अपनी। तो जो जैसे वर्ण और आश्रम है ना, इसलिए अपना व्यवहार, अपनी साइकोफिजिकल नेचर को समझना बहुत जरूरी होता है और उस हिसाब से आगे बढ़े। जैसे आजकल कंपनीज भी पता लगाना चाहती है ना कि हमारा एम्प्लॉय कैसा है, इसका माइंडसेट कैसा है।
प्राय सब कंपनीज ऐसा देखती है कि ये कैसा व्यक्ति है, ये बहुत रिसर्च ओरिएंटेड है, डेवलपमेंट ओरिएंटेड इसका माइंड है, रिसर्च ओरिएंटेड आइडियाज ओरिएंटेड माइंड है, या ये थोड़ा सा मोनोटोनस काम में इसकी रुचि रहती है, कुछ की भाई रिपीटेटिव मोनोटोनस काम में रुचि रहती है, इसका इसका ब्रेन बहुत इन्वेस्टिगेटिव है क्या, टेस्टिंग और एनालिसिस में और अच्छा चलता है। कई कंपनीज देखती है ना, भाई ये कैसे, इसको ईमेल्स पसंद है या क्या चैट्स पसंद है, मीटिंग्स पसंद है या मीटिंग्स नहीं पसंद है, ऐसा इंडिविजुअली या टीम में। तो ये सब देखते हैं कि व्यवहार के उसके मनोभाव मनोस्थिति साइकोफिजिकल नेचर के अनुसार फिर उसको एंगेजमेंट दिया जाता है। तो भगवान अर्जुन से कह रहे तुम्हारा साइकोफिजिकल नेचर वैसा है बाबा, तो तुम युद्ध करो, वही तुम्हारे लिए बढ़िया एंगेजमेंट है ना, जिसका काम उसी को साझे। अभी इतने गड़बड़ हो जाएगा ना, देखिए अब सम, संसार में तो समाज में आजकल हम क्या देखते हैं, ब्राह्मण कुल परिवार में कोई जन्म हुआ लेकिन ब्राह्मणिकल कल्चर के नाम पे शून्य ही प्राय है। थोड़े बहुत अगर होंगे गुण कुछ बाप दादाओं इत्यादि, तो थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन टाइप, लेकिन वास्तव में व्यवहार में इतना नहीं है, व्यवहार में इतना नहीं रहता। फिर भी अब कोई क्षत्रिय या ये ऐसा बनने जाए, ब्राह्मण का वृत्ति और करने लगे, तो उसका घमंड बहुत आ जाएगा, घमंड बहुत आ जाएगा, आएगा ही आएगा। तो टू हैव दैट गुड बैलेंस ना, स्पिरिचुअल और मटेरियल प्रोग्रेशन के लिए इट इज मच बेटर व्यक्ति अपनी स्थिति में रहे। इसीलिए तात्पर्य में बोलता है कितना सुंदर कि अब्रप्टली कुछ न छोड़े। और देखो, भागवत गीता के अध्ययन करके कहाँ पे हम कहीं समझ पा रहे हैं, कहीं पे ऐसा है क्या, वो कृष्णा हरे कृष्णा करने वाले तुम लोग तो बस मंदिर में ही रहने वाले हो, तुम लोग हरे कृष्णा वाले शादी नहीं करते हैं, ये पढ़ाई लिखाई भी छोड़ देते हैं, जॉब भी छोड़ देते हैं। कहीं पे ऐसा कुछ नहीं है भागवत गीता में कि भाई छोड़ दो छोड़ दो छोड़ देते हैं। और देखो अगर आप अधिकतर जो प्रैक्टिसिंग डिवोटीज है, 80-90% से तो सब के सब मैरिड लाइफ में ही है, मैरिड लाइफ में है। स्टूडेंट्स और की बात अलग है, खैर कितने हैं जो वास्तव में ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हैं, बहुत कम है ना, बहुत कम है। तो कहीं ऐसा नहीं है ना कि छोड़ देते हैं, ये छुटा देते हैं, ये सब अरे छूटता क्या है? बुरी आदतें छूट जाती है, वो सब छूट जाती है, अज्ञान छूट जाता है, तो ये तो छोड़ने के लिए और अच्छी बात है ना। तो जोड़ना है भगवान को, इसीलिए ना फाइटर नहीं, स्पिरिचुअल फाइटर बनना है। हाँ? तो जो भी हम कर रहे हैं, वी हैव टू बिकम ए डिवोटी, से पेरेंट डिवोटी चिल्ड्रन, डिवोटी बॉस, डिवोटी वर्कर, डिवोटी डॉक्टर लॉयर इंजीनियर, डिवोटी स्टूडेंट, ये बनना। स्टूडेंट तो है, अब डिवोटी स्टूडेंट बनो। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? ठीक है, तो कल हम 36वें श्लोक से थोड़ा और देखेंगे, और अर्जुन एक प्रश्न करते हैं। वो प्रश्न अभी मैं थोड़ा सा रिफ्रेश करके प्रयास करता हूँ बताने का, आप लोग उसका उत्तर बताना। तो अर्जुन का प्रश्न ऐसा है कि भाई चलिए हम अनुवाद पढ़ ही लेते हैं अभी, पढ़ने से स्पष्ट प्रश्न समझ में आ जाएगा हमें, और आप लोग बताना क्या उत्तर होगा उसका। बहुत सुंदर प्रश्न करते हैं अर्जुन। तो अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष अनिच्छमपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित। तो हर्ष आप ही पढ़िए, केवल अनुवाद पढ़िए। Arjun said, O descendant of Vrishni, वृष्णि। by Vrishni, O descendant of Vrishni, by what is one impelled to sinful acts, even unwillingly, as if engaged by force? हम्म, तो अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि पापम चरति पुरुष है ना। देखिए श्लोक ही समझे हम।
अथ केन प्रयुक्तो अयम, कैसे, मतलब उसमें क्या एक प्रकार से फोर्स, वो क्या उसको फोर्स है जो उसको पाप करने पे मजबूर कर देता है। पापम चरति पुरुष, व्यक्ति को ना चाहते हुए, अनिच्छम, अनिच्छम अपि वार्ष्णेय, हाँ, भगवान वैष्णव वंश में हुए ना, तो भगवान को कह रहे हैं अनिच्छम अपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजित है, बल पूर्वक, फोर्स से ना एकदम, कि उसको लगाया जाता है, व्यक्ति ना भी करना चाहे तो भी लगाया जाता है। तो ऐसी क्या वो शक्ति है, क्यों, है ना प्रश्न है कि भाई व्यक्ति ना चाहते हुए भी, देखिए, ना चाहते हुए भी गुस्सा, ना चाहते हुए भी क्रोध लोभ, ना चाहते हुए भी काम वासना, तो ऐसी माइंड। क्या, ठीक है, हाँ, तो माइंड में ऐसी क्या चीज है, उत्पन्न तो मन से ही ठीक है, लेकिन मन में ऐसी क्या भावना, क्या वो चीज है जो मन को एकदम से पाप करने पे मजबूर कर ही देती है। मन बोल देता है कि नहीं करो ये, रुको मत, छोड़ो, गलत सही क्या, भूल जाओ सब, बस, और अंधे होके फिर हम करने भी लग जाते हैं। फीलिंग ऑफ बीइंग बेटर। फीलिंग ऑफ बीइंग, मतलब कुछ गुस्सा निकाल के हमें अच्छा लगता है, ऐसी बात कर रहे हो क्या? हाँ मतलब फीलिंग ही कराती है, इंटेंशंस अलग भी हो बट फीलिंग स्ट्रांग होती है तो फिर गलत चीज भी हो जाती है, फिर बाद में रियलाइज करते हैं कि नहीं करना चाहिए था शायद। वो फीलिंग्स कहाँ से उत्पन्न होती है? माइंड। हाँ, मन में क्या ट्रिगर, क्या मन को ट्रिगर करता है, मन कैसे कन्विंस्ड हो जाता है? ठीक है, थोड़ा सोचिए, कल और प्रयास करेंगे समझने का। कल अनुवाद प्रश्न फिर से, अनुवाद फिर से पढ़ेंगे, तात्पर्य पढ़ेंगे, और थोड़ा और समझने का और प्रयास करेंगे। लेकिन है बहुत ये पावरफुल क्वेश्चन ना, कि ऐसी क्या चीज़ है जो मैं अपने साथ लेके चल रहा हूँ, और थोड़ा सा प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी के लिए और कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो? बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण।